जय जगन्नाथ पिला माने आज आम कंप्यूटर किसी एमसीक्यू डिस्कस करवा दे दिन कर चलतु आरंभ करवा डिस्कसन। तो फास्ट क्वेश्चन होची आमर कौन ए कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस कैलकुलेटिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड ऑल ऑफ दिस या भितर पांचटा ऑप्शन देछि ता भितर आम कौन जानते कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तापर सेकेंड नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन an electronic device operating under the control of instruction that can accept and process the data, produce output and store the results for future use is known as कौन कंप्यूटर। ताले इनपुट अच्छी सॉफ्टवेयर अच्छी गोटे आंसर हेनी तो कौन मोर आंसर कौन कंप्यूटर। तापर इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर प्रेजेंट कौन ना कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कौन इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस समस्त मिसिकी आमर कौन कर कंप्यूटर सिस्टम। तापर कंप्यूटर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड डैश व्हिच मीन्स कैलकुलेशन कौन या भीतर कंप्यूटर रु एटा डिराइव होइछि वर्डटा कोठू कंप्यूटर रु डिराइव होइछि यार माने कौन होछि माने होछि कैलकुलेशन। एटा को लैंग्वेज ना लैटिन लैंग्वेज रु आछि। एटा गला 5 नंबर क्वेश्चन। तापर देखिबा 6 नंबर कौन देला ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कौन कौन नहीं कि कंप्यूटर तैयारी होइछि ना ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स ताने सब को नहीं कि कंप्यूटर तैयारी होइछि। तापर कंप्यूटर गैदर्स डाटा व्हिच मीन्स दैट अलाउ यूजर्स टू डैश डाटा टू इनपुट डाटा कौन कंप्यूटर गैदर्स डाटा व्हिच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर्स टू इनपुट डाटा एटार आंसर हम बी। तापर डैश इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इनफॉरमेशन ताने यार आंसर कौन नंबर्स प्रोसेसर्स इनपुट डाटा नन ऑफ दिस आंसर है डी डाटा। तापर 9 नंबर कौन देला कंप्यूटर इज ए डिवाइस व्हिच इज ए व्हिच प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू यूजफुल कौन ये प्रोग्राम इनपुट इनफॉरमेशन इंस्ट्रक्शन नन ऑफ दिस 9 नंबर आंसर कौन हम इनफॉरमेशन डाटा को से कौन करे इनफॉरमेशन रे प्रेजेंट करे। प्रोसेस डाटा इज रिट्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ ए डैश डिवाइस रिट्राइव करा जिवो दिया जिवो ताको इनपुट डिवाइस रे रिट्राइव करा जिवो आउटपुट डिवाइस ताने आंसर हम बी। तापर आसला हमर 11 नंबर कौन देला information of a computer is stored as a analog data digital data modern data hybrid data none of this कौन हम 11 नंबर आंसर ना आमर डिजिटल डाटा ये को भलिया स्टोर हम ना डिजिटल डाटा। तापर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज डैश स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन सबुठार स्मॉलेस्ट यूनिट कोटा हम ना बीट केतेटा थाए 0 और 1 ये होजंती दीटा बीट। तापर एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज जहाँ को हमें टच करि परिबा देखि परिबा सेउडा सब कौन हार्डवेयर। नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कौन रिफर टू एज हार्डवेयर सॉरी जोड़ा को हमें देखि परिबा आउ छुई परिबा सेउडा होची हमर हार्डवेयर आ जोड़ा नॉन फिजिकल कंपोनेंट जहाँ को आम कौन करवा सेटा हूँ आम सफ्टवेयर तो कौन कह सफ्टवेयर 14 नंबर आंसर है सफ्टवेयर। तापर आसला आमर कौन 15 नंबर कौन देछि कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन कौन कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम यूज करे कंप्यूटर ना बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस सॉफ्टवेयर सबू को ये नहीं कि कंप्यूटर होइछि। तापर व्हिच इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर कोड़ा गोटे बेसिक फंक्शन है या भितर ना एक्सेप्ट इनपुट हाँ इनपुट तो से नहीं प्रोसेस डाटा स्टोर करे स्कान करि पारेनी एटा गोटे स्कानर डिवाइस करे स्कानटा ये करेनी हैला। तापर इनफॉरमेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कौन कहला इनफॉरमेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट दिया गला ताको एक्सटर्नल सोर्स रु कंप्यूटर को आसला सेटा कौन इनपुट दिया गला। तापर ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क
कंप्यूटेशन स्टोरिंग प्रोसेसिंग ये सब गुड़ा को करें पारे ऑल ऑफ द एबव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर गुड़ा काम नुहे डाटा कलेक्शन डाटा प्रोसेसिंग डाटा स्टोरेज डाटा आउटपुट डाटा कलेक्शन से करे कि कलेक्शन आमे करिकी ताकू दबा ना 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 डाटा कलेक्शन करे से जो इनफॉरमेशन नहीं से डाटा कलेक्ट भी करे तापरे इनपुटटा जो नबाटा है डाटा कलेक्शन से कला आ कौन कला ना आमर डाटा कलेक्ट भी से कला डाटा स्टोर भी कला प्रोसेस कला डाटा आउटपुट कला सब कला तेणु यार आंसर कौन हम नन ऑफ दिस कौन हम नन ऑफ दिस हम यार आंसर तापर आसला 20 नंबर गला तापर 21 नंबर कौन दे देखा 21 नंबर देला अबाकस वाज डेभलप्ड बाय यार आंसर कौन चाइना अबाकस वाज डेभलप्ड बाय चाइना तापर द वर्ड अबाकस वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैश कोथु आसी व्हिच मीन्स ए टेबल और ए बोर्ड कवर्ड विथ डस्ट तार ना हो तार माने होची हमर कोन अबाकस रो कोथु आसी ना हमर बी रे कोन रहला देखुछ गला 22 नंबर रे एटा कोथु आसला धाने द अबाक्स कोथु आसला अबाक्स रो अबाक्स रो माने कोन टेबल और ए बोर्ड कवर्ड विथ डस्ट तापरे अबाकस कुड परफॉर्म कौन करें एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करें तेणु एटार आंसर हला डी तापरे 24 नंबर देखा अबाकस वाज द फास्ट डैश कैलकुलेटिंग डिवाइस फॉर काउंटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स 24 नंबर कौन आंसर कहला अबाकस टा कौन वाज द फास्ट डैश कैलकुलेटिंग डिवाइस फॉर काउंटिंग ऑफ लार्ज नंबर 24 रे आंसर कौन हम इलेक्ट्रोनिक डिवाइस ना ये गोटे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस नुहे इलेक्ट्रिकल डिवाइस ना एटा गोटे मेकानिकल डिवाइस एटा गोटे मेकानिकल डिवाइस तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा एटा कौन सेट ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करे अबाकस तापर 26 नंबर कौन आसला व्हिच टाइप ऑफ बार्स व्हिच टाइप ऑफ बार व्हिच टाइप ऑफ बार आउ थे देखा पूर्व क्वेश्चन आम कौन कहले 25 नंबर ना कि 25 नंबर हाँ ठीक अच्छे तापर है 26 नंबर कौन कहले व्हिच टाइप्स ऑफ बार्स अबाकस यूज टू रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिजिट्स सच एज यूनिट्स टेन्स एंड हंड्रेड इटा कौ भाया डाटा वर्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट करे द काउंटिंग बोर्ड इन व्हिच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग ऑन वायर्स इज कॉमनली कॉल्ड अबाकस बाय व्हाट नेम इज इट नोन इन जापान जापान रे ताको कौन कहुची जापान रे कौन कहुची स्वानपान सोरबान नापियर्स बीड्स एटा हला बी आंसर हला बी द काउंटिंग बोर्ड इन व्हिच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज बीड्स स्ट्रॉन्ग ऑन वायर्स इज कॉमनली कॉल्ड एज अबाकस बाय व्हाट नेम इज इट नोन इन जापान जापान रे को कहउची सोरबान तापर आसला हमर 28 एंटी कैथरा मेकानिज्म वाज मेनली यूज्ड टू परफॉर्म डैश एंटी कैथरा मेकानिज्म कौन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिविजन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन यार आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन नापियर्स बोन इज आल्सो नोन एज द इन्वेंटर ऑफ कौन नापियर्स एडिंग मशीन मल्टीप्लिकेशन टू लॉगरिथम्स कौन एको कहउची ना लॉगरिथम्स इन्वेंटर ऑफ लॉगरिथम तापर रैप्डोलॉजिया वाज द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर रैप्डोलॉजिया कौन केबे इंट्रोड्यूस होता रैप्डोलॉजिया 30 नंबर रे 1617 रे एटा केबे होता 1617 रे तापर आसला हमर 31 कौन कहला नापियर्स बोन्स परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिविजन एडिशन सब्ट्रैक्शन ई सब करि पारे नापियर्स बोन तेनो डी ऑप्शन हैला तापर कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय
कंप्यूटर रो बेसिक आर्किटेक्चर कहा द्वारा आसला जॉन भन न्यूमैन को द्वारा ताने जॉन भन न्यूमैन को द्वारा कंप्यूटर रो बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप कराला तापरे इन व्हिच ईयर स्लाइड रूल वाज डेवलप्ड स्लाइड रूल केबे हेतला ना 1620 रे केबे 1620 रे 1620 रे तापरे आसला हमर कोन 34 नंबर देखिबा कोन देला स्लाइड रूल इज ऑल्सो नोन एज डैश इन यूनाइटेड स्टेट स्लाइड रूल को कौन कहूँ यूनाइटेड स्टेट रे स्लीप स्टिक बोली कहूँ तापर पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज डैश पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज आडिंग मशीन पास्कलाइन को कौन कहूँ आडिंग मशीन कहूँ तापर 36 नंबर कौन देला who describe the feature read one card at a time of a tableting machine read one card के बाहर करथिले फीचर टा ना हर्मन होलेरिथ के who describe the feature read one card at a time of tableting machine हर्मन होलेरिथ को द्वारा एटा करा हेतला तापर आसला 37 नंबर कौन दिला डैश वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस किए यार आंसर कौन हम कोलोसस कौन हम कोलोसस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस इन 17th century who was developed mechanical devices that could perform addition subtraction multiplication division and square root किए एटा तन आंसर कौन हम लेइबिन्ज कहा द्वारा हेतला लेइबिन्ज से कौन 17th century रे डेवलप करथिले गोटे मेकानिकल डिवाइस से कौन करथिला एडिशन करि परथुला सब्ट्रैक्शन करि परथुला सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्क्वायर रूट भी काढी परथुला तापरे 39 कौन दला देखिबा Dash was the first digital mechanical calculator which was designed to perform addition, subtraction, multiplication and division. It can also extract square root by a series of repeated addition. 39 रो आंसर कौन हला ना स्टीपर रेकनर कौन स्टीपर रेकनर ये कौन करथिले स्टीपर रेकनर से जो कैलकुलेटर ना कौन स्टेप्ड रेकनर Dash was the first digital mechanical calculator which was designed to perform ये लेइबिन्ज को द्वारा बाहर थिला 17th century कौन स्टीपर स्टेप्ड रेकनर the first mass produced mechanical calculating device was first mass produced कौन हम यार आंसर ना फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मेकानिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस पास्कलाइन आरिथमोमीटर पंच कार्ड मार्क 1 नन ऑफ द आरिथमोमीटर तापरे 41 कौन देला व्हाट डू यू मीन बाय जैक्वार्ड लूम कौन ए वेविंग मशीन यूज्ड टू पंच कार्ड तापरे आसला हमरो कौन 42 रे कौन कहला द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल वाज सिंप्लीफाइड बाय नापियर्स बोर का द्वारा 42 जैक्वार्ड लूमटा बाहर आमर जोसेफ जैक्वार्ड को द्वारा तापर हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर किए फास्ट प्रोग्रामर थिले आमर किए ना ऑगस्टा आडा बायरन थिले आमर फास्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तापर 44 नंबर कौन कहला 44 नंबर रो कौन कहला हु वाज द कंप्यूटर कन्सीव्ड बाय बाबेज एनालिटिकल इंजिन चार्ल्स बाबेज को द्वारा हेतला तारे हु इज द फादर ऑफ पंच्ड कार्ड प्रोसेसिंग रो फादर किए 45 रे हमरो कौन आंसर हबो इकट नुहे ना चार्ल्स बाबेज नुहे ब्लेज पास्कल नुहे डॉक्टर हर्मन होलेरिथ कौन हु इज द फादर ऑफ पंच्ड कार्ड प्रोसेसिंग हेला हर्मन होलेरिथ पंच्ड कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर कौन डाटा एनालिसिस ये कौन करे पंच कार्ड डाटा एनालिसिस करे 44 सरला 47 देखिबा कौन आंसर अछि 47 द फर्स्ट इलेक्ट्रोमेकानिकल कंप्यूटर मार्क 1 इन्वेंटेड बाय मार्क 1 कहा द्वारा इन्वेंट कराइथिला ना हावर्ड एकेन
तापर द फास्ट मेसिन टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए लॉन्ग सर्विसेस ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन फास्ट जे करथिला किए ना से मार्क 1 कौन करथिला मार्क 1 कहा द्वारा होता हावर्ड एकेन को द्वारा फास्ट मेसिन टू सक्सेसफुली परफॉर्म ए लॉन्ग सर्विसेस फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कोथरे होता मार्क 1 तापर आसला हमर 49 रे कौन आंसर which of the following computer system introduced the idea of a binary calculation binary calculation कोटा रे हितला ना एबीसी कंप्यूटर रे कोथरे ना एबीसी कंप्यूटर रे binary calculation आइडिया इंट्रोड्यूस हितला who has constructed the first Z series calculator featuring with memory and programmability Z series calculator कहा द्वारा हितला कोनार्ड जूसे किए कोनार्ड जूसे एटा हला हमर कोनार्ड जूसे द्वारा जेड सीरीज कैलकुलेटर जो थिला मेमोरी थिला प्रोग्रामेबिलिटी थिला द फास्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड किए ना हमर एनियाक होची हमर कोन एनियाक होची फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड तापर आसला हमर के एनियाक स्टैंड्स फॉर कौन ना इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर ना इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटेशन ना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैल्क ना इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स ना एटा होची हमर कोन आंसर होची ई इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तापर द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच यूज टू स्टोर इन प्रोग्राम रे स्टोर करने पे जो फर्स्ट है एर्साक कौन एर्साक तापर आसला हमरा 54 नंबर कौन कहला यूनिभाक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेशन कैलकुलेटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हाँ एटा ठीक ताने बीटा होची हमर ठीक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तापर द फास्ट कंप्यूटर वाज अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज पे फास्ट कंप्यूटर की आस्तिला ना यूनिभाक ता होची हमर फास्ट कमर्शियल यूज पे आस्तिला तापर आसला हमर 56 नंबर देखा कोन देची द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम वाज स्टोर्ड प्रोग्राम पे की आइडिया देथिले जॉन न्यूमैन के देथिले जॉन न्यूमैन तापर आसला हमर केते 57 रे कहूची which of the following devices is used in the first generation computer रे या भीतर कोटा यूज हेची इंटीग्रेटेड सर्किट ना प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन रे हमर वैक्यूम ट्यूब यूज हेतला द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड डू मल्टीटास्किंग ना नेटवर्किंग बैच प्रोसेसिंग मल्टीटेबुलेशन एटा करथला हमर बैच प्रोसेसिंग तापरे कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ओआर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पूर्व जो कंप्यूटर गुड़ा आसला सेटा सब कोन इलेक्ट्रोमेकानिकल 59 गला एबे देखा 60 रा क्वेश्चन कोन देची ना which of the following computer belongs to the first generation या भीतर फर्स्ट जनरेशन रे किए जाउची यूनिभाक अबाकस IBM 70 यूनिभाक अबाकस तापरे फर्स्ट जनरेशन रे जाउची और के जाउची यूनिभाक जाउची IBM 701 जाउची ताने दीटा जाक जाउची माने बोथ A and C द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड using machine language object code source code ASA assembly language 61 आंसर कौन machine language तो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर रे कौन थाए ना इलेक्ट्रॉनिक भाल्व्स वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर्स सेमीकंडक्टर मेमोरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ताने एटा होची इलेक्ट्रॉनिक भाल्व्स the first electronic digital computer contain electronic valves
तापरे आसला हमर 63 रे कौन देछि द मेजर डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच टू द फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर 4 जनरेशन इज इन the major difference between the approach to the fifth generation from the earlier 4 generation is in कोथरे दारंक भितर डिफरेंस अछि ना कोथरे अछि बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर रे अछि ना डिजाइन ऑफ सीपीयू रे अछि डिजाइन ऑफ मेमोरी रे अछि डिजाइन ऑफ मेमोरी रे अछि कोन जान डिजाइन ऑफ मेमोरी एटा आंसर सी तापरे हु हैज मेड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कहा द्वारा तैयारी हेतिला हमर कहा द्वारा ट्रांजिस्टर जॉन बर्दिन ट्रांजिस्टर तैयारी करथिले इन सेकंड जनरेशन व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज्ड टू स्टोर डाटा सेकंड जनरेशन रे डाटा स्टोर करिया पई को भलिया मेमोरी यूज करा होची एटा कोन ह मैग्नेटिक कोर कोन हमें यूज करछंती मैग्नेटिक कोर तापरे गला 66 रा आंसर कोन हबो 66 स्पीड ऑफ a second generation computer was in कोथरे हमर कोथरे थाए माइक्रो सेकेंड रे एटा कोथरे सेकेंड जनरेशन रहला माइक्रो सेकेंड रे थाए इन सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज यूज्ड टू डैश फॉर इंस्ट्रक्शन रादर देन नंबर कौन कहूची यार आंसर हबो कोन न्यूमोनिक कोड इन सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज यूज्ड डैश न्यूमोनिक कोड फॉर इंस्ट्रक्शन रादर देन नंबर बदले न्यूमोनिक कोड यूज होतला हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टान कोबल एटसेट्रा वे आर यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जनरेशन रे यूज होतला फोर्टान कोबल हाई लेवल लैंग्वेज गुडा सब हमर थर्ड जनरेशन रे यूज होतला कोथरे थर्ड रे एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इजर आर IBM सेकेंड 1401 1620 69 रे हल्ला हमर कोन एनसीआर एडा हल्ला सेकेंड जनरेशन से एनिया के एडभाग एडा न बी IBM 350 एडा न एडा हो जा हमर ए IBM 1401 आ 1620 ए दि जाना तापर आसला व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज covered by the period 1965 ru 71 65 ru 71 रे कोन होइछि ना थर्ड जनरेशन रो कंप्यूटर तापर आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग आईसी चिप जनरल मेड अप ऑफ आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कोथरे हेइ थाए ना सिलिकॉन रे कोथरे सिलिकॉन इज ए डैश मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल तापर आसला इन व्हिच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग केबे स्टार्ट हैला कोथरे ना थर्ड जनरेशन रे मल्टीटास्किंग हैला वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971 ताले टी गला हमर 74 एबे देखिबा 70 तब देखिबा 75 नंबर कोन देछि टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन became possible in dash generation of computer टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोठु स्टार्ट हैला ना थर्ड जनरेशन रे कोथरे ना थर्ड जनरेशन रे आरंभ हैला कांसेप्ट ऑफ कैश मेमोरीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैश मेमोरी रो कांसेप्ट कोठु आरंभ हैला ना थर्ड जनरेशन रे से थर्ड रे आरंभ हैला तापरे एबे असला हमर कोन 77 कंदला फोर्टान इज यूजफुल इन व्हिच सेक्टर साइंटिफिक पर्पस बिजनेस पर्पस ऑफिस मैनेजमेंट स्पोर्ट्स फोर्टान कोड बेसी यूजफुल ना साइंटिफिक यूजेस रे एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज आर कोन स्मॉलर इन साइज मोर रिलेबल यूज लेस एनर्जी ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस 78 आंसर कोन हबो ना ऑल ये मोर रिलेबल भी स्मॉलर इन साइज भी आ कोन यूज लेस एनर्जी भी तापरे देखिबा 79 कोन कहूची लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ चिप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 79 ने कोन कहला ना लार्ज स्केल LSI कोथरे ना फोर्थ रे तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन रे कोन ना SQL
एटा फोटा नुह मेसीन लैंग्वेज नुह सी लैंग्वेज नुह एसक्यूएल है आमर 4th जनरेशन लैंग्वेज तापर आसवा देखा 81 कौन कौन 81 रे कौन इन व्हिच जनरेशन फ्लॉपी डिस्क वाज इंट्रोड्यूस फ्लॉपी डिस्क के इंट्रोड्यूस है ना आमर 3rd जनरेशन रे फ्लॉपी डिस्क यूज है 3rd जनरेशन रे फ्लॉपी डिस्क यूज है तापर जी आमर 782 को 82 रे कौन गला ओराकिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर ओराकिल केबे ना आमर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रे ओराकिलटा 4th रे द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4th जनरेशन वाज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन 4th जनरेशन मेन कैरेक्टर है VLSI कौन VLSI तापर है व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट रे के अछि 84 रे आंसर कौन हम 5th जनरेशन computers will use large scale VLSI 5th generation रे कौन ना सॉरी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट 5th रे तापर एक्सपोर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोर्ट सिस्टम कहार कैरेक्टरिस्टिक्स 5th जनरेशन एक्सपोर्ट सिस्टम तापरे ग्राफिक एंड इमेज रिकॉग्निशन आर फीचर्स ऑफ ग्राफिक एंड इमेज रिकॉग्निशन ये है हमर 5th जनरेशन तापरे देखिबा 88 नंबर कौन कहला द फास्ट ट्रांजिस्टोराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन केबे 88 रे केबे 1956 रे कौन होता ना फास्ट ट्रांजिस्टोराइज्ड एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर वाज डेमोन्स्ट्रेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड लेटेस्ट जनरेशन रे इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियल पैरेलल बोथ ए एंड बी तापर Pentium 4 computer is the example of a dash generation Pentium 4 है 5th generation रो example तापर देखिबा 91 कौन कहूची the main distinguishing feature of 5th generation digital computer will be main कौन है 5th रो artificial intelligence तापर types of computer types of a microcomputer can be defined as कौन माइक्रो कंप्यूटर को केमे डिफाइन करबा ए स्मॉल लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर एटा भी ठीक ए स्टोरेज यूनिट एंड इनपुट आउटपुट चैनल माने ये सब गुड़ा ठीक हम तो आंसर है डी तापर देखिए 93 रे कौन देछि दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज और आर द लीस्ट पावरफुल येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर 93 रे कौन कहूची this type of computer is or are the least powerful yet the most widely used and fastest growing computer 93 रो आंसर तने किए ना माइक्रो कंप्यूटर processing capacity of a microcomputer is dash per second processing capacity आर केते 1 लाख per second माइक्रोकंप्यूटर रो और प्रोसेसिंग कैपेसिटी है 1 लाख per second तापर एबे देखिबा 95 रो आंसर कौन कहूँ ए नानो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विथ ए माइक्रो प्रोसेसर व्हिच इज द फास्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन कुछ माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर विथ ए माइक्रो प्रोसेसर व्हिच इज द फास्ट माइक्रो कंप्यूटर ताने किए हमर 95 रो आंसर होची अल्टेयर डी तापर देखिए 96 कौन कहूँ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर को आउ कौन कहा जाए पीसी बोली भी कहा जाए आउ कौन कहला ए पर्सनल कंप्यूटर इज डैश पीसी पर्सनल कंप्यूटर पीसी तापर है कौन आंसर एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप इज और आर एप्पल डेल IBM ये सब गुड़ा तेणु ऑल ऑफ द एभव तापर
computers that are portable and convenient for users who travel are known as କ'ଣ କୁହାହେବ ତାକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର has low memory is a computer that is used only by business people is eta to kebe hoboni is compact and lightweight enough to be transported from place to place। यार आंसर तने कौन होबो सी। कौन होबो सी। What are laptops? Computers used in clinical laboratories. A computer manufactured by company computer having voice recognition, a lightweight computer small enough to fit in a small suitcase। तने यार आंसर केते D। तापरे when was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? First laptop computer का द्वारा हेतला केबे हेतला कौन आंसर हबो एप्सन। एप्सन केबे ए 1981। ताले 1981 एप्सन को द्वारा फास्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हेतला। तापरे पोर्टेबल कंप्यूटर आल्सो नोन एज लैपटॉप कंप्यूटर weighing between 4 to 10 pounds is called ताको कौन कुहा जिवो नोटबुक कंप्यूटर। ताको तने कौन कुहा जिवो नोट